गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जी पैट रिविजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो एमसीक्यू है वो बेसिक फार्माकोलॉजी से है और ये बेसिक है पूरा, तो आप इसे कंटिन्यू देखिएगा। और टोटल क्वांटिटी इसमें जो है एमसीक्यू का वो 25 है। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट इज फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से जो पी क्यू आर एस जो हैं, इसमें से दो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, लेकिन है कौन? इसमें से जो दो ट्रू हैं, जो सही है, वो है कौन? तो फर्स्ट इज पी क्यू हम देखते हैं। एन इपिडर्मिक मीन्स सिंपल अप्लीकेशन ऑफ मेडिकामेंट ऑन द स्किन। क्यू एन epidermic means application of medicaments by rubbing. R. Anatophoresis means application of medicaments to and pushing it through skin to reach the blood vessels by electric transmission. S. Enucation means simple application of medicaments on the skin. अगर एक में देखें, ए में पी एंड क्यू होगा, या बी में क्यू एंड आर एस होगा, आर होगा, एंड सी क्यू एंड एस होगा, या डी पी एंड आर होगा। इसमें से कौन से होंगे? दो। द आंसर इज डी पी एंड आर, मतलब कि ये एंड ये। ओके, नेक्स्ट इज टू क्वेश्चन नंबर। Following statements are true for intradermal route। जो इंट्राडर्मल रूट का जो है स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा होगा सही? दो। तो ए पी, द ड्रग इज इंजेक्टेड अंडर स्किन। क्यू, दिस रूट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी टू ड्रग लाइक पेनिसिलिन। Or the drug is given within the skin layer. Okay, is special process of infusing large amount of drugs like glucose। ए में अगर देखें पी एंड आर होगा, ये बी में देखें क्यू एंड आर, एंड सी में देखें क्यू एंड एस, एंड डी में देखें तो पी एंड एस। इसमें से दो कौन से होंगे? चलिए देखते हैं। आंसर जो होगा ये बी होगा और ये क्यू एंड आर होगा। दैट मीन्स ये क्यू एंड ये आर। दिस रूट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग सेंसिटिविटी टू ड्रग लाइक पेनिसिलिन, एंड आर इज द ड्रग इज गिवन विद इन द स्किन लेयर। ओके, नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन नंबर। MgSO4 exert their various effect through flowing route are true. P, it produce positive effect if given orally. Q, it produce depressant effect if given parenterally. R, it does not produce any effect if given parenterally. S, it increases intracranial tension if given enema. A, P and Q, B, R and S, and C, Q and S, and D, P and S. Which one answer? The answer is A, P and Q। मतलब कि P, it produce positive effect if given orally, and Q is it produce depressant effect if given parenterally. Okay, next is four question number. Following statements are true for passive diffusion. P, it is saturable. Q, it is non-selective. R, it is energy dependent. S, it is energy independent. ए में अगर देखें तो P एंड R, बी में क्यू एंड आर, सी में क्यू एंड एस, डी में पी एंड एस। इसमें से दो कौन से होंगे? द आंसर इज सी, क्यू एंड एस।
यानी कि Q it is non-selective and S is it is energy independent. Okay. Next is 5 question number. Following statements are true for the facilitated diffusion. जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन का है इसमें से स्टेटमेंट जो है कौन से दो सही होंगे? पी में देखें इट इज़ अनसेचुरेबल, क्यू में देखें इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, आर में देखें तो इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट, एस इट इज़ एनर्जी इंडिपेंडेंट, ए पी एंड आर, क्यू सॉरी बी क्यू एंड आर होगा, या सी क्यू एंड एस होगा, या डी पी एंड एस होगा. Which one answer? The answer is C, Q and S. That means it is a non-selective and S is it is energy independent. Okay. Next is 6th question number. Transport diffusion is proportional to concentration gradient in P active transport, Q facilitated diffusion, R passive diffusion, yes S ion pair transport. ए में देखें पी एंड आर, बी क्यू एंड आर, एंड सी क्यू एंड एस, एंड डी आर एंड एस. विच वन आंसर? द आंसर इज बी क्यू एंड आर. दैट मीन्स फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड आर इज पैसिव डिफ्यूजन. ओके. नेक्स्ट इज 7 क्वेश्चन नंबर. 7 क्वेश्चन नंबर से पहले हम देख लेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन होते क्या हैं. तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन also known as facilitated transport और passive mediated transport. ओके. हम इसको किस नाम से जानते हैं? facilitated transport से और passive mediated transport से. ठीक है. ये एक प्रोसेस है. is the process spontaneous passive transport as opposed to active transport of molecules or ion across a biological membrane via specific transmembrane integral protein that is called facilitated diffusion. Okay. Next is passive diffusion. Passive diffusion is the process by which molecule diffuse from region of higher concentration to region of lower concentration. It is the most important mechanism for the passage of drug through membrane. Okay. That is called passive diffusion. Okay. Next is 7 question number. Flowing drug have more than 99% protein binding capacity. P digoxin, Q aspirin, R thyroxine, S warfarin. Which one answer? इसमें से दो कौन से सही होंगे? Next the answer is R and S यानी कि थायरोक्सिन एंड वारफिन. अब थायरोक्सिन और वारफिन होता क्या है हम इसके बारे में भी जानेंगे. थायरोक्सिन इज अ हार्मोन. ये एक हार्मोन है. द थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम. वंस इन द ब्लड स्ट्रीम थायरोक्सिन ट्रेवल्स टू द ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड किडनीज वेयर इट इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रायोडोथायरोनिन. Okay. Next is that is called thyroxine. Okay. Next is warfarin. Warfarin जो होता है sold under the brand name Coumadin among others is a medication that used an anticoagulant. It is commonly used to treat blood clot such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and to prevent stroke in people who have atrial fibrillation, valvular heart and disease or artificial heart valve, that is called warfarin. Okay. Next is 8 question number. Following drugs have less than 50% protein binding capacity. P insulin, Q aminoglycoside antibiotic, R diazepam, या S aspirin. Which one answer? The answer is A, P and Q. P insulin and Q aminoglycoside. अब इंसुलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड
एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन है और मेड इन योर पैनक्रियास, ए ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड योर स्टोमक। इसका लोकेटेड जो है स्टोमक में है। ओके, इट अलाउज योर body to use glucose for energy. Glucose is a type of sugar. ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का शुगर है, फाउंड इन मेनी कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि पाया जाता है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, आफ्टर अ मील और स्नैक्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड चेंज देम इनटू ग्लूकोज। ओके, that is called insulin. And then second is aminoglycoside. Okay, are potent bacterial antibiotics that act by creating fissures in the outer membrane of the bacterial cells. They are particularly active against aerobic gram negative bacteria and act synergistically against certain gram positive organism, that is called aminoglycoside. Okay, next is spironolactone is a prodrug and its active metabolite is a dismethyl spironolactone, b canrenone, c acetyl spironolactone, या d none of the above. Which one answer? The answer is B carinone. Okay, carinone होता क्या है? Carinone is an aldosterone antagonist with potassium aspiring diuretic activity. Carinone specifically antagonized aldosterone at the mineralocorticoid receptor in the kidney में होता है, by thereby increasing sodium excretion and inhibiting potassium excretion, that is called carinone. Okay, next is 10 question number. Most of the drug is absorbed through a active transport, b facilitated transport, या c passive diffusion, या d आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. जो ड्रग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब जल्दी कैसे होते हैं? ओके, किस ट्रांसपोर्ट से होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से, फ्यूजन से, या पैसिव डिफ्यूजन से, या आयन पेयर ट्रांसपोर्ट से. विच वन आंसर? द आंसर इज सी पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? हम The passive diffusion is the process by which molecules diffuse from a region of higher concentration to region of lower concentration. It is the most important mechanism for passage of drug through membranes. Lipid soluble drug penetrate lipid membrane with ease. That is called passive diffusion. Okay. Next is 11 question number. Morphines affected the eye by a producing meiosis through an action on the oculomotor nerve, या b producing mydriasis through an action on the sympathetic system, c decreasing pupillary responsiveness to light, d directly acting on the smooth muscle of the iris. Which one answer? The answer is c decreasing pupillary response to light. Okay, next is 12 question number. PDT value means a negative log of molar concentration and antagonist which produce half of the maximum response, b negative log of molar concentration
of an antagonist which produce of the maximum response. C. Negative log of molar concentration of an agonist which produce of the maximum response. T. Negative log of molar concentration and agonist which produce half of the maximum response. Which one answer? The answer is D. Negative log of molar concentration of an agonist which produce half of the maximum response. Okay. Next is drug having high affinity but low intrinsic activity is called A. Parietal agonist, B. Antagonist, C. Non-competitive agonist, antagonist, and D. Competitive antagonist. Antagonism, sorry. The answer is A. Partial agonist. Okay. पार्शियल ऑर्गेनिस्ट क्या होता है इन फार्माकोलॉजी में अगर देखें तो पार्शियल एगोनिस्ट आर ड्रग दैट बाइंड एंड एक्टिवेट गिवन रिसेप्टर बट have only partial efficacy at the receptor relative to full agonist, that is called partial agonist. Okay. Next is 14 question number. Phentolamine is competitive antagonism of A. acetylcholine, B. isoprenaline, C. noradrenaline, D. atropine. Which one answer? The answer is C. noradrenaline. Okay. Noradrenaline होता क्या है? Noradrenaline is an organic chemical in the catecholamine family. Catecholamine का एक family है that functions in the brain and body as a hormone and neurotransmitter, that is called noradrenaline. Okay. Next is 15 question number. PA2 can be defined as A. Negative log of molar concentration of an antagonist which produce half of the maximum response. B. Negative log of molar concentration of an agonist which produce half of the maximum response. C. Negative log of molar concentration and antagonist in the presence of which double dose of agonist required to produce same effect as produced in absence of antagonist. D. Negative log of molar concentration and antagonist in the presence of which half dose of agonist required to produce same effect as produced in absence of antagonist. Which one answer? The answer is C. Negative log of molar concentration of an antagonist in which presence of which double dose of agonist required to produce same effect as produced in absence of antagonist, that is called PA2. Okay. Next is 16 question number. Flowings are the chloride channel blocker. P. amiloride, Q. cadmium, R. picrotoxin, S. ketamine. Which one answer? The answer is A, R and S. R is picrotoxin and S is ketamine. Picrotoxin and ketamine क्या होता है? Picrotoxin is a toxin obtained from the seeds of the shrub Anaramita cockles. It is used as a central nervous system stimulant, antidote, coagulant, and GABA. That means gamma aminobutyric acid antagonist. It is an non-competitive antagonist at GABA A receptor and thus a coagulant.
convulsant, that is called picrotoxin. Okay. Next is ketamine. Ketamine is a medication primarily used for starting and maintaining anesthesia. It induces dissociative anesthesia, a trance like state providing pain relief, sedation, and anesthesia. That is called ketamine. Okay. Next is 17 question number. Following statements are true. P. Synergism means if two or more drugs are taken simultaneously, they increases the potency and or duration of other drug. Q. Addition means in which total effect of two drugs is just equal to the sum of their individual effect. And R. Potential means one drug produce on effect and increases the effect of other drug. Is synergism means one drug does not produce any effect but increases the effect of other drug. Which one answer? The answer is A, P and Q. Okay. P and Q. P and Q. Okay. Next is 18 question number. Acetylcholine and physostigmine are example of blank type drug interaction. A. Synergism. B. Addition. C. Potential. And D. Antagonism. Which one answer? The answer is C. Potential. Potential क्या होता है? Is an interaction between two or more drugs or agents resulting in a pharmacologic response greater than the sum of individual response to each drug or agent. Example, combination of sedative drug with alcohol, that is called potential. Okay. Next is 19 question number. In the bioassay, the convulsion activity in the mice is observed during blank use. A. Insulin. B. Histamine. C. Prolactin. And D. Oxytocin. Which one answer? The answer is A. Insulin. Insulin क्या होता है? Insulin is a hormone made in your pancreas, a gland located behind your stomach. Okay. It allow your body to use glucose for energy. That is called insulin. Okay. Next is 20 question number. Flowing drugs have volume of distribution more than 200. P. Warfarin. Q. Amitriptyline. R. Digoxin. S. Alcohol. Okay. Which one answer? The answer is B. Q and R. Q and R. Okay. Next. Q and R. Amitriptyline is used to treat symptom of depression. डिप्रेशन में इसको यूज करेंगे तो amitriptyline is in a class of medication called tricyclic antidepressant. It works by increasing the amount of certain natural substance in the brain that are needed to maintain mental balance. ये mental balance करता है एमिट्रिडिन. ओके. डिगॉक्सिन की अगर बात करें तो डिगॉक्सिन इज अ यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर. डिगॉक्सिन जो होता है वो हार्ट फेलियर का ट्रीट करता है यूजुअली अलॉन्ग विथ अदर medication. It is also used to treat certain type of irregular heartbeats such as chronic atrial fibrillation. That is called digoxin. Okay.
ये हार्ट फेल्योर का यूज कर सकते हैं, अगर हार्ट फेल्योर है तो ट्रीट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज 21 क्वेश्चन नंबर, आइसोलेटेड रैबिट जेजनम is used A to check adrenergic activity and mechanism, B to check activity of skeletal muscle, C to check activity straight muscle, या D none of the above. Which one answer? The answer is A to check adrenergic activity and mechanism. Okay. Next is 22 question number. Biopsies are carried out to A measure the pharmacological activity of drug, B avoid clinical trial for new drugs, C detect the impurity in a given drug, and D screen for pharmacogenetic influence of new drug. Which one answer? The answer is A measure the pharmacological activity of a drug. Okay, next is 23 question number, which of the following is CYP450 enzyme inhibitor? A grape juice, B rifampicin, या C barbiturates, या D carbamazepine. Which one answer? The answer is A grape juice. Okay, next is 24 question number, which of the following receptor shows the slowest response? A GPCR यानी कि G protein coupled receptor, B ion channel, C enzyme linked, and D steroid receptor. Which one answer? The answer is D steroid receptor. steroid receptor क्या होता है? steroid hormone receptor are फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जाता है, एंड ऑल्सो ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ टारगेट सेल. ओके, नेक्स्ट इज 25 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन इज ए सल्फेट कॉन्जुगेशन, बी ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, सी अल्फा अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन, एंड डी मिथाइलेशन. विच वन आंसर? द आंसर इज बी ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन. ये क्या होता है? ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन प्रोसेस इज अ perhaps the major and most common routes for the phase 2 metabolism to form water soluble metabolism, that is called glucuronide conjugation. Okay, thank you for watching my channel. Subscribe my channel and share to all pharmacy student. Okay, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय.